Hello friends, welcome to another tutorial which is a part of the ongoing series on sounds of English language. In these tutorials, this is the last part and this is the fifth part and the final part of the tutorial. In these tutorials, we have been learning about the sounds of English language, how to pronounce accurately all the words, all the English words. आमे केमिति सब उच्चारण करिबा ठीक भावरे एवं एक्युरेटली उच्चारण करिबा साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज रे एंड दिस इज द लास्ट पार्ट तापरे आमे आलोचना करिसे बा मु तुमको ए विषय पढौची बा सामान्य किछि ज्ञान दउची. Okay, so this tutorial is on tripthongs, triple vowels. In earlier classes we have learnt monothongs, single vowel sounds, and diphthongs, double vowel sounds. Let's recap. Okay, माउथटिके just what a रिकैपिटुलेशन करूची अथवा आउ टिके ताको तापर आउ टिके मु पढे पय चाहूची जणे दे पय चाहूची टिके ओटा जस्ट आइडिया दे पय चाहूची बिफोर टीचिंग यू अबाउट ट्रिपथॉन्ग्स. मोनोथॉन्ग्स हला सिंगल वावेल साउंड्स. कौन सिंगल वावेल साउंड्स हम आगुर पढिचे इन अदर ट्यूटोरियल्स. अ केमदे ट्रांसलेशन होची ए अ साउंड argument a word ame pronounce kurche a fat as we pronounce fat. U should could loud a सब words ame pronounce kurche a type ro पडुचे. u कोठी आछि ए u रो यूज कोठी होचे should, loud, could, e, fit, sit, every words I pronounce. These are monothongs or single vowel, mind it. And then comes diphthong. Diphthong means double vowel sounds. Dita vowel. Dita vowel sounds kon agur padiche ame ow, towel, like we pronounce in towel, oi, joy, coy, toy. Every word I pronounce kurche. I, shy, I, double vowels. Then poor, 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 pure. These are the words we pronounce. So we have already learnt monothongs, diphthongs. Today's class is on tripthong. So let's erase all these things, old ones, so that it will be clear for you. Okay? So what are tripthongs? What are tripthongs? Tripthong means three vowels. Earlier we have learnt single vowel, monothong, double vowel, diphthong, and this is three vowels sounds. Okay, always remember sounds, not vowels. Three vowel sounds कौन हला देछि या ऊपर मु आगुरु लेखि छिबी. buyer, buyer केमता हबो. थ्री vowel sounds हेले प्रथम जानिया पे चेष्टा करिवो. buyer, oyer प्लस श्वा. अच्छा श्वा इट गोटे श्वा बोले गोटे जिनस आछि. दिस इज अपसाइड डाउन ई. इंग्लिश ई लेटर हला ए टाइप रे हम लिखुचे ई तार उल्टा अपसाइड डाउन ई लेटर. दिस इज श्वा. Schwa very interesting. Schwa what a vowel sound.
schwa sound ta hala just relax your mouth and slightly open, then create a sound. Short sound, that is called schwa. schwa ta very interesting jinsa. schwa ta bi janiba kasta for beginners. As you learn about phonetics, phonetic transcriptions, different sounds of English language, aste aste janibo. schwa ta always present in English language. schwa chhada English language ra konsi gati nahi, omni present. jemti जमी चारिटे भगवान जमी चारिटे अच्छा सेमती schwa भी अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज एति जानी रखि था. schwa विषय में डिटेल्ड क्लास भी करी या पर नेक्स्ट ट्यूटोरियल बस जानी था. जस्ट एबे गोटे जस्ट सम्यक धारणा दूची schwa. तेणु आम ट्रिप्थोंग है डबल वावेल डिप्थोंग, diphthong words है double vowel, diphthong vowels है double, ow, cow, like this. So double vowel plus schwa, dita vowel plus schwa मिसले ताकू कहुचे आमे ट्रिप्थोंग आमे कहुचे. जेमते बायर और डबल वावेल प्लस schwa, buyer, oyer, buyer. Tinita dita vowel plus schwa. schwa is also another vowel. So tinita vowel misle tripthong hochi. Sendi buyer, sendi lawyer, oyer plus schwa, diphthong plus schwa, tripthong. से भाया लॉयल्टी ओय प्लस schwa, career ईयर, career career year plus schwa, career, triple vowel sounds. So these are tripthongs. Tripthongs अर्थ है triple vowel, तीनटा vowel. Monophthong वाला single, diphthong वाला 2 vowels and tripthong वाला 3 vowels. इतनी जानते हैं. These are the basics. So and schwa, ता भीतर को schwa जिनिस अछि डबल वावेल डिप्थोंग प्लस schwa. ए schwa ऊपर मु नेक्स्ट ट्यूटोरियल रे पढेबी कोन schwa त डिटेल बुझेबी. वर्तमान किंतु आज इज द वेरी शॉर्ट क्लास, इज द लास्ट, द फाइनल ट्यूटोरियल ऑफ द ऑनगोइंग सीरीज ऑन साउंड्स ऑफ इंग्लिश. या पर हम schwa ऊपर पढिबा. तेणु फ्रेंड्स मोर तो गोटे रिक्वेस्ट, मु सब बेले भी मोर वीडियो रिक्वेस्ट करछि, प्लीज डू कमेंट. तले थिबा कमेंट बॉक्स रे कमेंट दियो कौन जाने पय चाहछो, कौन कौन प्रॉब्लम रहउछि. जेमते डिप्थोंग, ट्रिप्थोंग, मोनोथोंग, schwa गोटे जिंस हला या पर मु पढेबी. किंतु ए सब जो किछि जे कोठी डाउट रहउछि ताल त मते जणेले मु तुम पुन नेक्स्ट ट्यूटोरियल गोटे नेबी. तुम डाउट क्लियर सेशन गोटे आरंभ करी. तेणु कमेंट न कले किछि हबनी. यदि वीडियो भल लगुच लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब करना. यस, सब्सक्राइब बटन पाखे गोटे बेल आइकन अच्छी, से बेल आइकन भी पुश करने भूलनी, कारण ताको पुश कले तो फर्दर नोटिफिकेशन जो मुझे जेको फ्रेश ट्यूटोरियल आरंभ कले तुम गोटे नोटिफिकेशन जो. ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग. Stay tuned, stay healthy, stay fit, stay confident, and try to learn English language pronunciation, sounds of different words, how they are pronounced accurately. Okay, thank you for watching.